Assalamu alaikum everyone. I am Alina Batool, sub-publication section in charge of Medico's Its Society. Am I audible to you? Ji Alina, you are audible. Okay. And now I'm going to give a brief introduction of Medico's Aid Society. Established on April 28, 1983, Medico's Aid Society is a student-based, non-political welfare organization of Rawalpindi Medical University. Our society operates through 5 major sections: blood, medicine, finance, publication, and general section. Blood section is dedicated to arranging blood donations for thalassaemic patients and emergency cases in hospitals. The medicine section conducts free medical camps in remote areas of Rawalpindi Medical University of Rawalpindi and Islamabad, and also organizes vaccination camps against hepatitis B. Finance section manages MAS expenses and also provides medical aid to the deserving patients and donates medical equipment to the allied hospitals of Rawalpindi Medical University. As a publication section, our role is to showcase all MAS activities through social media platforms and leverage social media influence to raise awareness about crucial medical issues. We organize webinars, podcasts, focusing on health-related topics. The general section oversees the functioning of all sections and also conducts executive and general body meetings. Today, I extend warm welcome to all of you to the Medico's Aid Society webinar titled Stigmas Related to Mental Health, especially in Pakistan. Our esteemed speaker for today is Dr. Riffat Batool, a graduate of Rawalpindi Medical University. Dr. Riffat is a certified youth and corporate trainer with extensive experience in conducting training sessions in the educational institutions, NGOs, and corporate sectors such as US EFP and Aga Khan Health Services. She currently serves as the project lead for a multi-million youth leadership conference, Marco 2024, and she also works as a medical officer at Kuwait Medical Complex, Skardu. Dr. Batool's journey with MAS began in 2016 as a junior executive, and she has since been promoted to the position of publication section in charge and later to the senior executive. We are honored to have her with us today. Thank you all for joining this webinar. Okay, now Dr. Riffat Batool will continue proceeding this webinar. Thank you so much, Selena, for the introduction. And I'm so happy to see publication section doing so much work these days, because I remember when we were in publication section, tab ye sari journey start hui thi ki acha kuch online bhi karna hai. So it's so nice to see you all here. So today's topic is related to stigmas related to mental health issues. So first of all, हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि what we are going to discuss. Let's have an overview of what we are going to see today. Sanai, can we have next slide, please? And we have with us Sanai Mohammed, who is my personal manager, and he'll be hosting us with side by side with Alina, and he'll be facilitating us with a few things. So the agenda for today is, first there's icebreaker, फिर हम देखेंगे कि stigmas क्या हैं popular, क्यों हैं, and understand why mental health disorders come into being and what we can do to support those suffering. So first of all, let's have an icebreaker, since this is a webinar and I know that all of you cannot speak here. So we'll have this icebreaker in our chat. आप लोगों ने जो भी questions आप लोगों के होंगे या जो भी interactive session होगा, that will be in the chat. So what is that one thing that always brings smile to your face? So this is a question not just for me or Alina or Sanai, this is for every one of you, each and every one of you. So for me, it would be food. कोई भी खाना, मुझे कोई aesthetic सा खाना, कोई अच्छी सी चीज नजर आए, तो I am so happy. That makes my day. So what is it for you? Drop in the chat and we'll see. Okay, friends, brother's face.
Parents smile, nice. Birthday cake, nice makeup, nice. Seeing people like you happy always. Thank you. Family and friends, another person smiling. Layers का Sunday off मुझे भी बहुत पसंद है. Very nice. Okay, thank you so much, everyone. So this is a session where not just I speak, you guys also speak. So I'll be speaking and you'll be telling me, and you might be writing and I'll be telling you. So this is a two-way session, and this is a two-way learning process. If we can have next slide, Sanai. So stigmas. Stigmas, what do you think is a stigma? आपके ख्याल में स्टिग्मा क्या होता है? In the comments. Social taboo, okay. Taboo, okay. Nice. What else? Taboo, okay. Nice. What else? An inappropriate label, nice. Very nice. Dark reality, nice. Comments, nice. Taboo, nice. So yes, that's about stigma. People think this problem isn't real. So stigma is something जिसको आप बहुत negatively देखते हो, और the person associated with whatever stigma you're associating them, you discriminate them based on the stigma that you have in your mind. So today we are here because हम अगर कहें ना कि मेरी फलां फ्रेंड को डिप्रेशन है, मेरी फलां फ्रेंड को एंजाइटी है, and we think that it's not coming to us, ये हमारी misconception होगी, because studies show that in your life and in my life we have 100% chance of getting mental health issue. चाहे वो बहुत ज्यादा हो सकता है, चाहे वो कम हो सकता है, किसी भी ग्रेड में हो सकता है, लेकिन वो होगा जरूर. It could be depression, it could be anxiety, it could be distress, it could be anything. So me and you and the people around us, everybody you see around you, they are going to have some mental health issue in their life. 100% probability hai. Before the age of 65, we will have it. So you and I are here to destigmatize this mental health issue that I and you might have and the people close to us might have. Because अगर हम अभी अपने लिए और अपने प्यारों के लिए स्टेप नहीं लेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और शायद जब हमारे पास टाइम होगा कि हम उनको दे सकें, या फिर जब हमें ज़रूरत होगी कि कोई हमें टाइम दे सके, तो शायद हमें वो मिल नहीं सकेगा, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन इट टू एनीवन एल्स. सो दिस इज because you and me will also experience, and you and I must know what it is. मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रही थी. ओके, सो व्हाट आर द कॉमन नैरेटिव्स. हम बात करें स्टिग्मास की, तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली द कल्चर वी लिव इन, व्हाट आर द पॉपुलर स्टिग्मास? ड्रॉप इन द कमेंट्स. सुनाया, आपने स्लाइड पहले चला दिए. Drop in the comments what are the specific stigmas in Pakistan according to you. जो lines हम सुनते हैं specifically about mental health. लोग क्या कहेंगे? Very nice. नमाज पढ़ो, पागल हो गया है. Very nice. Thank you. Attention seeking, it's all in your head. Very nice. उनको जिन चढ़ गए हैं. Yes, very nice. Psycho. If we take step for someone and advice, हम सबके साथ बैठी. Nice. बैठो. तू है कौन? Okay. So different, a range of things that we hear, a range of things that we experience, and a range of things that we get to know कि अच्छा ये भी होता है. जैसे कहते हैं कि ईमान की कमजोरी है, डिप्रेशन होता है किसी को, they are having these thoughts and they are having suicidal thoughts, and people are like,
ईमान की कमजोरी है, नमाज पढ़ो ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर एक स्टिग्मा ये भी होता है कि मैं किसी को कैसे बताऊं, वो एक स्टिग्मेटाइज इतना हुआ, वो एक टैबू समझा जाता है मेंटल हेल्थ इशू को, कि अगर मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसी थॉट्स आ रही हैं तो मैं किसी को कैसे बताऊं, बिकॉज नोबडी वुड अंडरस्टैंड। फिर अच्छा, इसको अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास ले गया तो हमारे खानदान के नाम पे एक धब्बा हो जाएगा। फिर अच्छा, ये अजीबोगरीब बातें करता है, ये कहता है उसने मुझे कहा, वो फर्जी एक दोस्त है मेरा, वो मुझे कहता है, तो जिन चमड़ गया। अच्छा, फिर अगर चलो समझ आ गई कि कोई मसला है और उसको ट्रीट करने की जरूरत है, तो मैं दवाई लूंगा। तो दवाई के तो बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, मैं तो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा, नहीं मैं दवाई नहीं ले सकता। फिर देर इज दिस जेंडर स्टीरियोटाइप towards men specifically, they are not allowed to have emotions and to show emotions। तो मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, and these all lead to stigmatizing this issue that they are having in that moment। शायद हो सकता है they are depressed but they are not unable to express it। फिर अच्छा, ये अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे मेंटल हेल्थ इलनेस है, तो आई वुड बी कॉल्ड a psycho, आई वुड बी कॉल्ड क्रेजी, एंड आई डोंट वांट दैट। फिर ये साइको है, इसको निकालो, इसकी कंपनी में ना रहो, बुलिंग बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ illness or disorder। So different kinds of stigmas and spectrums of things that we get to hear। So अब ये जो सारे stigmas हैं, ये क्यों हैं? Let's see where they're coming from। So now can we have the next slide, please? Okay, so why they exist? Multiple reasons and multiple excuses for people to bully the people who have mental health issues। So they start with shame। मुझे अगर कुछ है तो मैं किसी और को बताने में बहुत एम्बेरसमेंट फील कर रही हूँ, शेम। देन फैमिली ऑनर कंसर्न्स, के अगर मेरे खानदान की बात, ये इतनी सीक्रेट बात किसी और को पता चल गई तो फिर तो खानदान की बदनामी की बात हो जाएगी। कल्चरल मिसकंसेप्शंस, सुपरनेचुरल मिसकंसेप्शंस, इसको जिन चिमड़ गया, इसको चुड़ैल चिमड़ गई है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दे आर रिलेटेड मोस्टली टू मेंटल हेल्थ इलनेसेस। फिर रिलीजियस स्टिग्मेटाइजेशन, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ोगे तो ये नहीं होगा, ईमान की कमजोरी है, अल्लाह से करीब हो जाओ तो ये नहीं होगा, विच इज इन पार्ट a truth because we are all Muslims and we believe in that। लेकिन मेंटल हेल्थ इलनेस को हमेशा उससे एफिलिएट करना इज स्टिग्मेटाइजिंग इट। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर मुझे अंदाजा नहीं होगा कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस क्या है, जो कि अक्सर लोगों को नहीं है, 90% ऑफ our people in Pakistan, so they stigmatize it because they don't know what it is। And the fear of being labeled as psycho or crazy or पागल, मैं अगर कोई दवाई लेना स्टार्ट करती हूँ या फिर मैं साइकोथेरेपी पे जाती हूँ, तो पीपल वुड कॉल मी अ साइको। वो मुझे यही मजाक मजाक में भी दोस्त भी यही कहेंगे कि तो साइको हो गए तो थेरेपी ले रहा है। Then fear of treatment, the side effects that the medicines have, and general population does not know कि दवाई लेने से ज्यादा ना लेना नुकसान करती है, and then they fear the treatment and then they don't go for it। Then employment discrimination, एक तो फ्रेंड्स में मजाक मजाक में होता है इससे दूर रहो ये साइको है, एक जॉब पे भी होता है कि इसको फला, इसको डिप्रेशन है, ये जॉब सही से नहीं कर सकता, इसको हम नहीं रख सकते। सीवी कितनी ही अच्छी हो, कॉम्पिटेंसी कितनी ही नजर आ रही हो, लेकिन इफ यू हैव अ मेंटल हेल्थ इलनेसेस यू हैव लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड। देन जेंडर स्टीरियोटाइप अगेन, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, लड़कों को, मर्दों को, दे आर नॉट गिवन दैट स्पेस टू एक्सप्रेस एंड हैव इमोशंस। एंड लास्टली लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, मैं और आप जब ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते तो वी आर गिविंग अ फर्म बेस फॉर दीज स्टिग्मास टू रेन द वर्ल्ड फॉर एवर एंड एवर। नाउ ये तो बात हो गई स्टिग्मास की, बात हो गई कि वो क्यों है। अब हमें देखना ये है कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। स्टिग्मास हैं और वो बहुत डीपली रूटेड इन आवर कल्चर हैं, वो सदियों से चलते आ रहे हैं।
we have to see why we need to destigmatize. Why do we need to destigmatize these stigmas? So the root cause of mental health illness or mental health disorder, we have to see that. एक तो होता है genetics में. I am right here. I am a trainer, and I've had many experiences training on this same topic on childhood traumas, inner child healing, on different varieties of psychology and psychiatry. And I always tell people that I have had depression and I still have episodic depression, which is under control, and I don't feel shame in having it. And I also tell people कि ये मेरी genes में. Genetics play a huge role. It does. And I know as a doctor कि genes बहुत important role play करते हैं. So there are two things that we need to understand. Number one is your gene. आपके जीन्स में अगर डिप्रेशन है तो हायर चांसेस कि एक बंदा जिसके जीन्स में नहीं है उससे ज्यादा आपके हायर चांसेस है कि यू गेट दैट disease, you get that disorder once in a lifetime, maybe multiple times. And then number two is childhood experiences. And I cannot emphasize enough on how important the second is. And it is so important that the first can be overruled by the second one. Childhood experiences. हमारे बचपन में जो भी चीजें होती हैं, they are responsible for making us the person that we are. चाहे हम depressed हैं, चाहे हम anxious हैं, चाहे हम confident हैं, वो सारा कुछ हमारे childhood में start होता है. And it is so important to understand that दिस इज नॉट अबाउट रिफत को स्टेज पे जाने से डर लगता है तो रिफत अगर 20 साल की है तो ये रिफत के 1-2 साल का डर है, ये रिफत के बचपन से आया होगा लाजमी. इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर रिफत को ट्रेमर्स हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, तो ये रिफत अगर 25 साल की है तो 24-23 साल में नहीं आया होगा, ये 10 साल में आया होगा. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका, मेरा और उस शख्स का जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे हैं. तो आई फाउंड अ वेरी गुड वीडियो ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. विल हैव अ लुक एट दैट and try to understand कि how our childhood is related to who we are today. So if Sanai, you can please play that video for all of us. Physical, cognitive, or emotional neglect, say because their mother was sick and their father was busy, often face anxiety. As a result, their body produces stress hormones. If this happens a lot, these hormones become toxic for their developing brain, which then later can repress emotional and cognitive well-being for life. The real story of Daniel Bucarianu, who spent part of his early childhood in a Romanian orphanage, shows the full impact neglect can have. The story began in 1966 when Romania's then leader, Nicolae Ceausescu, wanted to make his country a world powerhouse and came up with laws to increase the country's population. Abortion and contraception were declared mostly illegal. While the law led to a rapid rise in birth rates, many of the poorer families were unable to take care of all their children, and Daniel and around 500,000 others were sent to state-run institutions. In most orphanages, there were no toys, no books, or anything else to stimulate cognitive development. Many kids just stared at the bare ceilings, waiting for their next meal. Due to the lack of human contact, some babies develop strategies for self-stimulation, such as rocking back and forth. The cognitive neglect often led to lower IQ scores, delayed language development, and a lack of creative thinking. This happens because our brains build connections with every new experience and stimulation. If there are no rich experiences during the first years of life, the period in which the brain develops the fastest, children cannot build the foundations necessary for optimal future learning. They miss out for life. Daniel lived with over 400 other children, and their shared bedrooms were hardly ever cleaned. The meals were mostly tiny portions of boiled cabbage, which the staff would sometimes steal to eat themselves. Some supervisors used violence to control the orphans.
Others encouraged the older kids to beat Daniel, to humiliate him and exercise authority. The consequences of physical neglect and lack of basic nutrients caused most orphans to suffer from stunted growth. Some children contracted HIV and hepatitis B as a result of the reusing of medical supplies. The physical abuse caused severe bruising and other injuries. The overworked and undertrained staff hardly ever soothed the crying children. In fact, they barely spent any time with Daniel at all. Some children were left completely alone with their worries. Others hid their feelings from the very people who ought to protect them, since they feared being hurt. Emotional neglect and anxiety lead to an excessive production of the stress hormones known as adrenaline and cortisol, which is like poison for the developing brain. But the experience also distorted the children's understanding of love and human relationships. They learned to trust nobody, and as adults, often suffered from depression, insomnia, and social anxiety. When Ceausescu's regime was eventually overthrown and the conditions inside the orphanage were shown on television, researchers from around the world came to examine the nameless children. MRI scans later showed that some had smaller volumes of brain mass. The resulting research made a strong case that not only is nutrition vital to a child's development, but so is human contact. To help the children, a large number were adopted into foreign families. But even after being adopted, many had problems forming loving bonds to their new parents. This aligns with the attachment theory and the notion that a child needs to establish a loving relationship with at least one primary caregiver early in life. Daniel was quite lucky with his family. While he continued to experience trauma and anxiety, he went on to have a university education, started a family of his own, and later he founded a non-profit organization for neglected children. If you grew up in a loving environment, count yourself really, really lucky. If you experienced forms of neglect, try to internalize the idea that it was never your fault, and maybe not even your parents' fault either. To read what we think can be done if you have ever experienced neglect, read the descriptions below. One way is to share your thoughts about neglect and how you think it affects you today. Thank you so much, Sanaya, for the video. So that was a video that I found would be very helpful in understanding कि आपकी childhood से लेकर adulthood के जो experiences हैं, how they are linked together. That means teachers from all So in the chat, I want you to write down what you understood from the video. क्या समझ आया? Thank you, Nazish. Just whatever you understood from the video जो भी हमने देखी है. Thank you so much, Nazish. Your thoughts on the videos, your learning from the video, or whatever you think that you can take away from the video, whatever it was, just drop it in the comments. Children need care, not just food. Thank you so much, Kaval. Children really need care and a lot of care. Childhood traumas leave marks on person's personality, yes, and they shape you into the kind of person that you are today. Childhood experiences make the basis of your point of view about the world. So true. आप दुनिया को उसी लेंस से देखते हो जिस लेंस से आपको दुनिया दिखाई जाती है. So if you as a child have seen the world red, आप बड़े होके उस वर्ल्ड को आप रेड ही देखोगे. We should let me keep track. We should be very concerned about our behavior when we are around kids. Yes, very important. Now here you are. Mental instability and behavioral changes is not a sudden process. It is a result of chronic insult. It surely is. Love is an essential nutrient for our growth. Yes. With that personality. Everyone needs some attention. Yes. Children copy their parents. Yes.
So whatever we get as children, we are inclined to reciprocate that and we keep that with us. हमारा एक, समझो आप एक बस्ता है ना, आपने कमर पे एक बैग उठा लिया बचपन से, यानी जब से आप पैदा हुए हो और जब से आपने होश संभाला है, वो बैग आपने उठाया है। और जब भी आप एक एक साल बड़े होते गए हो, तो हर साल का एक वजन आपने उस बैग के अंदर डाला है, एंड दैट वेट इज योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। अब वो वजन अच्छा भी हो सकता है, वो वजन बुरा भी हो सकता है। सो दैट गुड एंड द बैड एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव हैड एज अ चाइल्ड, they make you the person that you are. You could be anxious, you could be depressed, you could be happy, you could be satisfied, depends on the experiences that you have gone through. So that was to make you understand कि ये कहाँ से आता है। और अब जब हमें समझ आ जाती है कि ये कहाँ से आता है, तो क्या मेरे और आपके कंट्रोल में ये था कि मैं स्कर्दू के घराने में पैदा होती? डिड आई हैव अ चॉइस कि मैं पंजाब में पैदा होती, या डिड आई हैव अ चॉइस कि मैं अमेरिका में पैदा होती? देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। तो मैं कहाँ पैदा होती हूँ, मैं किस घर में पैदा होती हूँ, लोगों का मेरे साथ रवैया कैसा होता है एज अ चाइल्ड व्हेन आई एम नॉट कॉन्शियस, these are things that are not in my control, and these are things that are not in your control as well. तो मेरे और आपके childhood experiences were not in our control, or maybe they were not in our parents' control as well, because it was their first time and it was something that they did अपनी तरफ से बेहतरीन, लेकिन maybe they did not have the awareness to do it better. सो मेरा और आपका जो एक्सपीरियंस था, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, और ये हमने अपने ऊपर एक होता है ना कि आई ब्रॉट दिस अपॉन माई सेल्फ, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इफ यू कैन हैव नेक्स्ट स्लाइड्स एंड आई। सो कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं करते हो अपने लिए, जैसे कि इफ आई ब्रेक माई लेग, तो इट्स नॉट समथिंग आई ब्रॉट अपॉन माई सेल्फ। अगर मुझे बुखार हो जाता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसी तरह मुझे टाइफाइड हो जाता है, मुझे मलेरिया हो जाता है, मुझे कोई भी डिजीज हो जाती है, मुझे कैंसर हो जाता है, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल एंड इट इज नॉट माई फॉल्ट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी मेंटल हेल्थ डिजीजेस होती हैं, दे आर नो डिफरेंट देन फिजिकल हेल्थ इलनेसेस, फिजिकल इलनेसेस। सो अगर मैं फिजिकल इलनेस अपने ऊपर खुद नहीं लाती, एंड वी आर नॉट responsible for that illness that we have, and we are not the culprit for that, तो mental health illnesses के लिए भी we are not the culprit. We need to understand that we and the people around us are not the culprits for having mental health illnesses, because nobody wants an illness. मैं नहीं चाहती मुझे बुखार हो, मैं नहीं चाहती मुझे डिप्रेशन हो, वो हो जाता है। We need to understand that, and we need to destigmatize that. And since we are not कह लें बहुत हम प्रोफेशनल्स नहीं भी हैं, अगर हम स्टूडेंट्स हैं और हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं स्टूडेंट थी and I saw friends suffering from mental health illnesses, I was also suffering, they were also suffering. तो what can I do on my part उन लोगों के लिए जिनको मैं चाहती हूँ, जो मेरे करीब हैं? आप लोग अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकते हैं? सिंस वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, में भी हम शायद साइकेट्री हमें बहुत डिटेल से नहीं पता, साइकोलॉजी भी शायद उतनी डिटेल से नहीं पता होगी, हम प्रोफेशनली सीबीटी नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं अपने पार्ट पे कि मेरा जो एक दोस्त है या मेरे जो खानदान में कोई बंदा है हु इज सफरिंग, मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। सो नंबर 1 वुड बी listening and understanding with non-judgment, by accepting your illness first. Radical acceptance that comes later, but first acceptance, yes. And you need to accept your condition first for everyone else to accept it. And then if I'm a friend and my friend is suffering, so what I can do for him or her is I listen to them, क्योंकि जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या जितने भी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स हैं, they are there because they don't find someone who would listen and they don't find someone who would understand. जैसे कि अगर if I have someone, I have a friend who is suicidal and I am listening to him or her, and I am listening to him or her with judgment, कि मैं उसको सुन तो रही हूँ, लेकिन फिर जब सारी बात मैंने सुन ली तो उसके बाद मैं एक जजमेंट इम्पोज करती हूँ कि लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी जान नहीं लेनी चाहिए थी, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। सो अंडरस्टैंडिंग विद नॉन जजमेंट,
बिकॉज कोई भी बंदा मरना नहीं चाहता, कोई भी इंसान अपने लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन अगर एक बंदा उस स्टेप पे पहुंचा है कि दे जस्ट वांट टू एंड इट, तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज गोइंग ऑन रॉन्ग, दैट इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन देयर लाइव्स दैट दे आर डूइंग इट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड things from their perspective instead of putting your judgment upon it. And before we go on to the next, I want you guys to drop in the chats कि आप लोग क्या कर सकते हो अपने ऐसे sibling, friend, relative के लिए who is struggling. How can you help them? And don't give them the line that I have had it worse. Never do that. There is no comparison. Yes, there is no comparison in mental health struggle, and there is no comparison in traumas. अगर आपको किसी और का ट्रॉमा नहीं समझ आ रहा, doesn't mean it shouldn't be like that. Doesn't mean they shouldn't be struggling like that the way they are. Thank you so much, Nazish, for that. Anyone else who wants to contribute? Make them feel secure. Yes. कि अगर वो आपके पास आया है, गिव देम टाइम. नाइस. अगर वो आपके पास आया है तो उसको ये महसूस हो कि दिस इज अ सेफ स्पेस फॉर मी, और यहाँ पे मैं कोई भी बात कर सकता हूँ. डोंट मेक देम फील इनसिक्योर. वेरी नाइस. ट्राई टू एम्पथाइज. यस, एंड नॉट सिंपथाइज बट एम्पथाइज, कि आप उसकी बात समझ रहे हो, उसका दुख समझ रहे हो. लिसन देम. यस, वेरी नाइस. लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिव लिसनिंग. ये भी ना हो कि बस आप सिर्फ सुन रहे हो और आप फिर कहीं फोन पे लग रहे हो और फिर इधर उधर देख रहे हो. एक्टिव लिसनिंग, यू आर गिविंग देम द ड्यू अटेंशन. Act like normal around them. Don't let them feel insecure. Very nice. You don't have to tell them to be strong. Instead, listen to them and be empathetic towards them. I totally agree. And having a mental health illness, crying, showing your vulnerability is not weak. Is definitely not weak. Don't offer solutions. Yes, offer solutions only if they want solutions. You ask them, okay, do you need a solution or do you just want me to listen? So if they want a solution, you give them solution. If they don't want a solution, you just listen to them. Let them be vulnerable if they want to. Yes. And don't joke around about their vulnerability, and don't put judgments on their vulnerability. And don't put labels on them for sharing their vulnerabilities, because it takes immense strength to share your vulnerabilities. किसी को ये कहना कि I'm suffering from this, एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें ऑलरेडी ये बहुत स्टिग्मेटाइज है, it takes real courage. Confidentiality, yes. अब ऐसा भी ना हो कि आप एक बंदे की बात सुन के फिर एक थर्ड पर्सन को उसकी बात बता रहे हो. इट ब्रेक्स ट्रस्ट, और वो जो एक बंदा पहले से स्ट्रगल कर रहा है वो मजीद एक स्ट्रगल में जाता है कि अच्छा मेरे इस दोस्त ने मेरे साथ ये किया. फिर thank you so much for that. Sanai, can we have next? Yes. Be patient and show presence. हमें कभी कभी लगता है कि अच्छा मुझे आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, अच्छा मैं इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती. सो शायद मेरे लिए बेहतर है कि मैं इससे दूर रहूं. शायद आई शुड गिव देम टाइम. बट द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर दोज सफरिंग विद मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स इज दैट पीपल आर नॉट प्रेजेंट. तो अगर मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन एमबीबीएस एज अ स्टूडेंट, मेरी एक फ्रेंड थी, शी हैड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि हाउ टू डील विद सच पीपल, हाउ टू मेक देम फील सिक्योर, क्योंकि उनके लिए अगर आप दरवाजे से बाहर भी चल रहे हो ना, तो आपके जो दरवाजे की टप 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 है उससे भी उनको एंजाइटी होती है. तो लोगों की प्रेजेंस से उनको एंजाइटी होती है, उनको मतलब डिफरेंट चीजों से उनको एंजाइटी होती है, और हर बंदे का अलग अलग होता है. सो आई रिमेम्बर आई डिड नॉट नो हाउ टू मैनेज एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू सपोर्ट हर. सो द ओनली थिंग आई डिड वॉज, मैं बस जाती थी हॉस्टल में, उसके कमरे में बैठती थी, एंड वी डिड नथिंग. वी डिड नॉट टॉक, वी डिड नॉट डू एनीथिंग. बस मैं जाती थी और मैं बैठ जाती थी. एंड दैट वॉज समथिंग दैट शी टोल्ड मी के योर प्रेजेंस मैटर्ड. कि एक बंदा है जो कि उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, बट शी इज स्टिल कमिंग एंड बीइंग हियर विद मी. So that counted a lot. So presence is very important. Next is respecting their boundaries. अब अगर एक बंदा है जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, इस स्टेट में है कि they cannot eat well and you are pushing them. I know that you love them, but while you are loving them, you're pushing them कि इस अपनी जो कंफर्ट जोन भी नहीं बल्कि अपनी जो कैपेसिटीज हैं उससे बढ़ के करो. खाना खाओ, उठो, उधर जाओ, इधर जाओ. यू आर पुशिंग देम, और वो
उनके लिए it's becoming a toll. So don't do that to them. Let them understand that you understand their situation, that you understand कि अच्छा उससे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, तो I can offer help. I can tell them कि जब कुछ मेरी help की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, and let me know if you want me to push you, लेकिन don't push them without their consent. And treat them like you would like to be treated. Like I said, 100% probability you and me are going to have a mental health disorder in our lives. So जब मैं इस मकाम पे होंगी तो मैं कैसे चाहूंगी कि लोग मेरे साथ एक्ट करें? क्या मैं चाहूंगी कि लोग मुझ पे तंज करें, ताने दें, मुझे नीचा दिखाएं, मुझे मजाक करें मेरे ऊपर? या फिर मैं ये चाहूंगी कि कोई एक बंदा हो जो मुझे सुने, जो प्रेजेंट हो, जो मुझे समझे और मुझे सपोर्ट करे? बेशक मैं कुछ चीजें गलत भी बोल रही हूँ, कुछ चीजें गलत कर भी रही हूँ जिसमें बहुत बड़ा हार्म नहीं है, तो वो भी करने दे. सो वट एवर यू थिंक कि मैं जब इस सिचुएशन में होंगी तो आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, just treat them like that. And the last one is offer practical support. ऐसे ना हो कि जो सपोर्ट आप दे रहे हो उसकी उनको जरूरत ही ना हो. जैसे कि आप उनको सपोर्ट ऐसे करने लग जाओ कि आप उनके लिए ईद की शॉपिंग करने चले जाओ, बट दे डोंट नीड एनीथिंग ऑन ईद राइट नाउ, दे जस्ट नीड टू ब्रीथ. So offer support जो कि उनके लिए helpful है, not what you think would work, but something that actually works for them. And the last would be encourage professional help. And that is difficult इसलिए क्योंकि this whole topic is stigmatized so much and people are fearful about facing their own realities कि हम therapy में जाना नहीं चाहते. तो that is difficult, but do try कि once you build that trust with that person कि वो professional help ले, क्योंकि हमने जो अभी discuss किया कि ये सारी चीजें हम उनके लिए कर सकते हैं, these are helpful and these are therapeutic. लेकिन जो underlying cause है वो एक therapist ही, एक professional ही उनके लिए उस underlying cause को treat करा सकता है. So make sure that whenever that time comes कि आपने उनको इतनी support दे दी कि वो आप पे ट्रस्ट करने लगे एंड दे नो दैट यू वांट द बेस्ट फॉर देम, डू encourage professional help. That's all for today. That's how to connect with me on Instagram. I'm active on both. वैसे तो Riffat Batool official is my trainers page. Riffatastic is somewhere I just do whatever I want to do. So if you want to connect with me, those are the links. And that's all for today. कोई questions हो आप लोगों के तो you can chat in the you can drop in the chat box. We'll have 5 minutes for question answers. अगर आप लोग चाहें बोलना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज कर लें. We'll unmute you and you can just say whatever you want to say. Question answers हो, कोई suggestion हो, कोई comment हो. Okay. जी नाजिश. Hello. जी जी. Yeah, I was saying that there is like no. I have talked to you about this personally as well. That there is no crisis intervention in Pakistan for people like suffering from mental health disorders. Like किसी की टांग टूटी है अगर रात के 2 बजे, so you take her or him to a hospital and they fix the leg. You know, they get the X-ray done and then they get the slab done and everything. But किसी का दिमाग अगर काम करना बंद हो गया है रात के 2 बजे and they are having actual mental health issues, like they are having intrusive thoughts and they are having, you know, thoughts to harm themselves. Like there are people in my circle who contact me at like 2 a.m. or 3 a.m. कि जी ये मसला हो रहा है आप क्या करें. But there are no crisis intervention helplines in Pakistan. So what should we do then? Okay. Nazish, do you have any suggestion that what we can Yeah, do? I have a suggestion. I like, so this is not my space, this is your space basically.
but I started a blog, and my purpose of starting that blog is to take it somewhere where we have that, support group, um, for people like जैसे बाहर के मुल्क में होता है ना कि even if a mental health professional is not available at 2 a.m. or 3 a.m. क्योंकि पाकिस्तान में there are two helplines, एक तस्कीन है और एक और है, but if you call them so they put you on like waiting list, और वो एक वो musical सा बजना शुरू हो जाता है, and that keeps on going for 5 minutes, and that messes up with your brain mood. So people get frustrated. So there should be like communities within us, like हम जैसे लोग, जैसे the people like us who are taking interest in this topic, हम लोग एक कम्युनिटी बनाएं, एक सपोर्ट ग्रुप बनाएं, जहाँ पे एटलीस्ट वी कैन टेल ईच अदर स्टार्ट में कि अगर कुछ भी बंदे को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो वो उस ग्रुप में शेयर करेगी, राइट नाउ आई एम हैविंग दिस these issues, these issues, and the other people who have gone through it, yeah, who have tried to mitigate the situation, तो वो उनको solution बताएं कि yeah, you can do this, you can do this, and we are here for you. Let's just stay here for a while and let's just breathe one day at a time, that kind of thing. And then we can take it further. जब थोड़ा हमारी community grow करे तो we can add in the psychologist, psychiatrist, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में who want to help. So we can take them on board, and we can, make our own crisis intervention support system which is available 24/7. क्योंकि मैंने ये फील किया है कि, बल्कि मैंने ये देखा है कि जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस इंटरवेंशन होती है ना, वो भी इट इज ओपन फ्रॉम यूजुअली मॉर्निंग 10 a.m. टू शाम के 4 p.m. और फिर शाम के 5 p.m. टू रात के 10 p.m. उसके बाद ओवरनाइट ये ओपन नहीं होती, like you cannot call them at night. लेकिन ER, trauma center, emergency, surgical emergency, they are open 24/7. So I that's totally point. agree with you, Nazish. स्पेशली इन पाकिस्तान एक वो होता है ना मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, वो नहीं है सिस्टम. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, एंड आई थिंक द सोल्यूशन दैट यू गिव इज द बेस्ट सोल्यूशन. होता है ना कि जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही होती, जब इदारे कुछ नहीं कर रहे होते, तो हम फिर थोड़ा सा डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं कि अच्छा कोई भी कुछ नहीं कर रहा है इस बारे में, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना. तो आई लाइक दैट यू हैव द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, so we can do that. Also, Eamon and Alina, if we can, and if the people in this webinar want to join, we can have a group. If Eamon and Alina think that we can do that, तो हम एक ये जो नाजिश ने आइडिया दिया, we can implement that here. क्योंकि इस वेबिनार का मकसद यही है ना कि अवेयरनेस हो और उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकले. तो इफ दिस वेबिनार इज गोइंग टू क्रिएट दैट सोल्यूशन, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती कि वी कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो अलीना एंड Eamon, आप लोग ये डिस्कस कर लें, एंड देन लेट अस नो इफ देयर इज एनी प्रोग्रेस, एंड देन यू कैन कांटेक्ट द पीपल थ्रू द फॉर्म्स दैट दे हैव फिल्ड. थैंक यू सो मच नाजिश फॉर योर इनपुट. So am I still unmuted? नाजिश Hello? दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आई मुझे. Am I still unmuted? यस. Okay, thank you. So I really want this to work, but I need people like you and people like Alina and Eamon in this, because अकेला एक बंदा कुछ नहीं कर सकता ना, मतलब we need people in this cause. So we can start from somewhere where we can have, like 2, 3 people in the group, and then we can, post this on our socials that, we are here to listen to you. Like simply posting this that we are here, and there, trust me, there will be many people who will contact us. Yeah, we want to talk. We just want someone to listen, because there are people who contact me on like every second to third day, just because I'm very vocal about my mental health. So people reach out to me. People must reach out to you, Riffat, as well. I know that. So I think we should start somewhere instead of just talking and then closing this webinar and बात यहीं पे खत्म हो जाए, बजाय इसको let's just take a step further ना. हाँ, I totally agree with that. तो Eamon और Elena ये डिस्कस कर लेंगे, and then they'll let us know. Sure. Thank you so much, Nazish. Thank उस्मान, you. आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर चैट में एक क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करना चाहूंगी. उस्मान, आप पहले कर लें.
Man, you can unmute yourself. Okay. चलिए जब तक उस्मान अनम्यूट करते हैं, we'll take the question from chat. ओके ठीक है, उस्मान से गलती से हैंड रेज हो गया था भाई. ठीक है, क्वेश्चन इज के ब्लैक मैजिक. लेट मी रीड द होल क्वेश्चन. Dr. Riffat, how can we counsel people having mental health issues but they insist that we are having black magic spells and even providing justifications by saying that a particular taweez or something like that is treating their condition temporarily? Okay, and I was actually waiting for this question because this is something very common. I was talking to someone here Skardu में and he said कि मैंने ना 400 घरों में मैं गया और 400 घरों में ना मैंने पूछा उनसे ना कि घर के हालात कैसे और फला फला. तो 400 घरों में से 400 घरों ने ही कहा कि हम पे जादू हुआ हुआ है, हम पे तावीज हुआ हुआ है. सो दिस इज समथिंग इन आवर कल्चर एंड इन मे बी हिस्ट्री से बहुत रिलेटेड है कि पुराने जमाने से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि जादू है, तावीज किया हुआ है, विच इज ट्रू एंड वी बिलीव इन इट बिकॉज आवर रिलीजियस हिस्ट्री शोज दैट इट इज एक्चुअली जेन्युइन. जादू होता है, ये चीजें होती हैं, जिन होते हैं, जादू होता है, ये चीजें कुरान में है, तो वी बिलीव इन दैट. नाउ द थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर इज अगर 100 लोग हैं ना, तो 100 लोगों में से 99 को जादू नहीं होता, उनमें से 1 को जादू होता है. और वो जो 99 है, अगर उनमें कोई और मसला है, उनको पैल्पिटेशंस हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, ट्रेमर्स हैं, उनको अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, स्लीप पैरालिसिस है, और खास तौर पर स्लीप पैरालिसिस में आके कोई गला घोंट रहा होता है उनका, तो दे आर लाइक ये जादू हुआ है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो 100 में से 1 है ना, वो तो है एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, लेकिन जो 99 है दैट इज नॉट जादू, होपफुली नॉट. अब टू कन्विंस देम इज समथिंग जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक होता है ना कि आप बिल्कुल ही एफर्ट ना करो, और दूसरा होता है आप एफर्ट करो लेकिन उसका आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता. तो बिल्कुल एफर्ट ना करने से बेहतर है यू ट्राई और फिर बाकी चीजें अल्लाह पे छोड़ दो. जो लोग खासतौर पर ब्लैक मैजिक और जिन और ये सारी चीजों का कहते हैं कि यही है, 100% यही है, उनके लिए बेस्ट ये होता है कि यू गिव देम स्मॉल डोजेस ऑफ अवेयरनेस. अब अगर आप उनको ना एकदम से ये कहोगे कि नहीं ये जादू नहीं है, ना ये जिन है, ना कोई चुड़ैल चिमड़ गई है, ये इस तरह की मेंटल हेल्थ डिजीज है, इस तरह होता है, और फिर वो एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ इंफॉर्मेशन जब आप ऐसे लोगों को देते हो ना, जो कि उनके पुराने बिलीव्स को निगेट करता है. इट्स टेलिंग देम दैट वट एवर यू हैव थॉट थ्रू आउट लाइफ इज फॉल्स एंड वट आई एम टेलिंग राइट नाउ इज द फैक्ट. तो दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैट. ऐसे लोगों को आप स्मॉल चंक्स ऑफ डोजेस देते हो, एंड इफ दे आर एजुकेटेड थोड़ा सा भी, तो यू सेंड देम सर्टेन वीडियोस जिसमें उनके वो उन वीडियोस के साथ जिससे रिलेट कर सके. जैसे कि अक्सर लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है और उनको लगता है उनको जिन है या उनको लगता है उनके ऊपर जादू किया हुआ है. तो वो जो स्लीप पैरालिसिस की अवेयरनेस है ना, यू कैन सेंड देम थ्रू अ वीडियो और यू कैन टेल देम स्लीप पैरालिसिस क्या होता है. तो जब वो उस सिम्टम के साथ रिलेट करते हैं ना कि अच्छा ये तो मुझे भी होता है, तो फिर उनका और आपका जो ट्रस्ट डेवलपमेंट है वो बढ़ जाती है. उनको समझ आती है कि अच्छा इस बंदे में नॉलेज है और ये जो मुझे बता रहा है आई कैन ट्रस्ट हिज इंफॉर्मेशन. तो वो स्मॉल चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम जब उनके पास जाता है, तो एक टाइम पे ऐसा ज्यादातर हो जाता है, कुछ में नहीं भी होता, कि दे चेंज देयर आइडियाज एंड दे शिफ्ट फ्रॉम जादू से थेरेपी. सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. और हमारे पार्ट पे हम ये कर सकते हैं कि उनको स्मॉल डोजेज ऑफ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस दें ताकि उनको समझ आए इसके बारे में थोड़ा सा बेहतर. Eamon and Elena, please tell me if we have more time for questions. अस्सलाम वालेकुम. अभी एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यूट्यूब चैट पे. वो पूछ रहे हैं कि इफ देयर इज अ पर्सन हु ट्रस्ट यू विद हिज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड यू वांट टू हेल्प देम बट हिज कंडीशन आल्सो ट्रिगर्स योर ओन ट्रॉमा, सो इस डिलेमा में क्या करना चाहिए? आजम मुराद बाजवा ने पूछा है. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई हैव मेंशन इन द चैट एज Okay, वेल. this is very interesting. And the thing, thank you so much for the question. And one thing I tell people is to have that self-care and have that self-compassion
कि अगर आपको लगता है ना कि आप खुद इतना ज्यादा ट्रिगर हो रहे हो किसी और के ट्रॉमा से कि आपकी अपनी एक मेंटल स्ट्रगल स्टार्ट हो गई है, तो जस्ट स्टेप बैक फॉर अ लिटिल एंड टेल देम। ऐसे भी नहीं कि बस आप डिस्टेंट हो गए, अवॉइडेंट हो गए, और वो बंदा पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, उसको फिर एक स्ट्रगल ये भी आ जाएगी कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ये कर दिया। So distance yourself from them and tell them that your trauma is triggering my trauma. So I need some time and I need to regain my energies before I can support you. So associate them, affiliate them with someone else जो कि आपको पता हो कि आपकी तरह का सपोर्ट दे सकता है, अंडरस्टैंडिंग है, मेच्योर है, एम्पैथेटिक है। उनको कोई ऐसा बंदा लाजमी दे दें ताकि वो स्ट्रगल ना करें, और अपने आप को थोड़ी देर के लिए विड्रॉ कर दें उनसे। And then this thing about traumas and this thing about triggers is, first time is the hardest, and the second and third time is not. It is hard, but it is not the hardest. यानी पहला जो आपका ट्रिगर से एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पोटेंट होता है। लेकिन जब विद टाइम बार बार वो एक्सपीरियंसेस आप करते हो, दिस इज हाउ यू ट्रीट फोबियाज, बार बार एक्सपीरियंस करते हो तो वो जो एक ट्रिगर रिस्पॉन्स होता है वो दिन ब दिन कम होता जाता है। तो यू लर्न टू बी ओके विद देम ओवर टाइम। लेकिन वही बात है कि जब यू सी के आई एम ट्रिगर्ड, तो हैव दैट सेल्फ कंपैशन कि अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करें, नॉट जस्ट एवरीबडी एल्स अराउंड यू बट योर सेल्फ टू, एंड हैव दैट सेल्फ केयर कि अच्छा आई नीड अ ब्रेक टू एंड आई नीड सम रेस्ट टू। तो आइसोलेट योर सेल्फ फॉर सम टाइम। अभी एक और क्वेश्चन आया हुआ है चैट में, व्हाट इज द बायोलॉजिकल रीजन ऑफ स्लीप पैरालिसिस? ओके, हाँ, क्वेश्चन है किसका? हाजिरा शबीर का। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द डॉक्टर्स हियर, आई वांट टू नो योर ओपिनियंस फर्स्ट। आप लोगों के ख्याल में क्या है? नाजिश का हैंड रेज है। नाजिश, आप स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताना चाहती हैं? स्लीप पैरालिसिस के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा सर्च किया है, और मुझे कुछ आइडिया था भी इसके बारे में। तो लेकिन मैं इससे पहले एक और बात करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स है ना, हम लोग उस फेज से गुजर चुके हैं, हम लोग डॉक्टर्स बन चुके हैं। तो मैंने एक 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 सोल्यूशन देना चाह रही थी। कैन आई गिव द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो पहले बात हो रही थी कि ब्लैक मैजिक और इन चीजों पे जो बात हो रही थी कि हाउ डू वी मेक देम बिलीव दैट मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रियल। कैन आई लाइक अच्छा, ये हुआ था कि मैं सिंपली तो ये कहती हूँ अपने पेशेंट से कि ना, जैसे आपको शुगर है ना, तो आप जो है अपने पेंक्रियाज को, अपने लबलबे को कह दो ना कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि इसको कहें कि इंसुलिन बनाना शुरू कर दे। तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा तो ठीक है, आपको बाहर से इंसुलिन का टीका नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी शुगर खुद ही सेट हो जाएगी। तो दे से कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो लगाना पड़ता है ना टीका। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि हाँ, तो आपके दिमाग में फिर इस तरह सेरोटोनिन तो है वो कम हुआ होता है, या उसका रीअपटेक जो है वो खराब हुआ हुआ है, वो सिस्टम खराब हुआ हुआ है, तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में कम है सेरोटोनिन। तो यू हैव टू टेक द पिल और इट इज ट्रीटेबल, इट टेक्स 6 to 9 months एंड इट गेट्स ट्रीटेड। डिप्रेशन की बात करी उन्हें, तो इस तरह से उन्हें थोड़ी समझ आ जाती है इस बात की कि अच्छा ठीक है, मतलब ये भी दिस इज समथिंग मेडिकल, थोड़ा बायोलॉजिकल इशू है ये इट इज नॉट ऑल इन योर हेड वाला चीज। प्लस एक और चीज ये हुई कि मेरे अंकल हैं, ही हैज पार्किंसंस डिजीज। तो अब ना वो कह रहे थे कि मैं ना बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली इस चीज को ठीक कर लूंगा, और मैंने मुझे जो डॉक्टर ने लीवोडोपा और एडोनिरोल वगैरह, डोपामिन आपकी बॉडी में क्रेव बहुत है ना पार्किंसंस में, तो मैं उसको ठीक कर लूंगा। मुझे डॉक्टर ने दिन में 3 दफा गोली बोली है, लेकिन मैं ना 2 दफा गोली गोली लेता हूँ और जो तीसरी दफा आज भी गोली लेता हूँ, लेकिन मेरे हाथ की ट्रेमर्स जो है ना वो उसी तरह ही है, और मेरी ना मेमोरी भी अभी जा रही है। एंड ही इज जस्ट 52 years old नाउ। तो फिर मैंने उन्हें बैठ के समझाया कि आपका जो ब्रेन है ना, उसमें डोपामीन इस तरह से नहीं बना। अब ये पुरानी हो गई है, हमने बहुत पहले पढ़ी थी, अब हम जनरल फिजिशियंस है तो वो पूरी एक डिटेल याद नहीं आती है। आप बच्चों को याद होगी जो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अभी जो बुक्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने उन्हें ऊपर ऊपर से थोड़ी थ्योरी समझाई। मैंने कहा डोपामीन को ना बॉडी में पूरा करना है उसका लेवल। जब तक वो लेवल पूरा नहीं होगा, आपकी बॉडी एक नॉर्मल बंदे की बॉडी जैसा फंक्शन नहीं कर सकती। तो जब आप उसको खुद से ही मेडिसिन को कम करेंगे, इट कैन नॉट फंक्शन लाइक अ नॉर्मल बॉडी। तो आपको एक प्रॉपर डोज मेडिकेशन की चाहिए,
so that it can act like a normal body और आपके tremors कम हो, आपके memory issues जो है कम हो, tardive dyskinesia और बाकी के सारे symptoms आ रहे हो कम हो, तो उस दिन he actually, like I don't want to say this, but he actually started crying because उनको उनके अपने न्यूरोफिजिशियन ने भी ये बात बैठ के नहीं समझाई थी कि क्यों जरूरी है डोपामिन एंड क्यों जरूरी है एसएसआरआईज एंड क्यों जरूरी है बाकी चीजें। मैं दो चीजों को मिक्स कर रही हूँ, बट जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, इवन पार्किंसंस हो गया और एनीमिया हो गया और ये चीजें हो गई, लोग नहीं समझते, लेकिन आपने बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अ डॉक्टर, आपने उनको इन तरीकों से समझाना है कि जैसे इंसुलिन आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसी तरह सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह ये चीजें भी नहीं बन सकती खुद से, तो आपको मेडिसिन की फॉर्म में देनी पड़ती हैं, या फिर देयर आर नेचुरल वेज टू इंक्रीज दोज हार्मोन्स, लाइक फिजिकल एक्टिविटी हो गई, प्लेजरेबल एक्टिविटीज हो गई, हेल्पिंग समवन, इस तरह ये वाली चीजें, फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि आप उनको इस तरह से समझा सकते हो, और वो भी एक दो में नहीं कि पहले ही बैठ के था घर पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रिफत बात करी ना, डोजेज में, स्मॉल डोजेज में, पहले एक दफा बात की, फिर दूसरी दफा बात की, फिर तीसरी दफा समझाया, तो दे एक्चुअली अंडरस्टैंड, क्योंकि अब एजुकेशन लेवल लोगों का ज्यादा हो रहा है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो बजाय व्हाट्सएप पे वो अबू लोग जो पुरानी वीडियोस और लंबी लंबी वीडियोस देखते हैं, वो देखने की बजाय ऐसी छोटी छोटी स्मॉल क्लिप्स हम बनाना शुरू कर दें और लोगों को बताना शुरू कर दें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, तो दे विल गेट द आइडिया। आई होप दैट अस्सलाम हेल्प। वालेकुम मिस Very nice. डॉक्टर डॉक्टर नाजिश, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे रह जाएंगे, तो थोड़ा सा काइंडली शॉर्ट इसको रखिएगा प्लीज। This was my last one. I'm muting myself now. Sorry. Okay, so thank you so much, Nazish, for your input. Next question was sleep paralysis का। तो अच्छा, नाजिश के अलावा कोई बताना नहीं चाहेगा? एनी रफ आइडियाज चैट में, खासतौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स को तो पता होता है। किसी को भी कोई आइडिया हो, रफ सा आइडिया हो बेशक। आई थिंक लाइक आई एम द फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे इतना तो एक्सपीरियंस या मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट व्हाट आई थिंक इज स्लीप पैरालिसिस जो होता है वो इस कॉज से होता है कि जो एक तो फर्स्ट ये कि चाइल्डहुड कोई ऐसी आपकी मेमोरी होती है जिसको हम कह सकते हैं ना, जैसे दुखती रग होती है, तो उस पे अगर किसी भी टाइम पे ना आपकी लाइफ में उस पे दोबारा लाइक कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जो जो आपको वो याद दिलाए या उसको बार बार जो है वो इंट्रीगेट कराओ, तो आई थिंक उसकी वजह से हो सकता है कि वो जो टेंशन है या वो एक्यूमुलेशन हो जाती है उन हॉर्मोन्स की हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस हो सकता है और बॉडी खुद ब खुद वो चीज़ें अज्यूम करना शुरू कर देती है वो जो एक्चुअली नहीं हो रही होती। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच हाजरा। स्लीप पैरालिसिस इज वेरी मच रिलेटेड टू स्ट्रेस। बेसिकली होता ही है आपके ना, जो थर्ड ईयर एमबीबीएस में है या उससे ऑनवर्ड्स हैं, दे माइट नो अबाउट स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल में एक होता है रेम स्लीप, एक होता है नॉन रेम स्लीप। तो जो रेम स्लीप होती है ना, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये एक ऐसी स्लीप होती है जिसमें ड्रीम्स होते हैं, जिसमें आप ख्वाब देखते हो। अब होता है ऐसे कि ये जो रेम स्लीप होती है ना, ख्वाब देख रहे हो आप, यानी आपके माइंड में कोई इमेजेस बन रही है ना, तो जब आपका ब्रेन टेस्ट किया, ये रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड है, आपके जो ब्रेन वेव्स है ना वो ऐसे एक्टिव होते हैं जैसे आप यू आर फुली अवेक। तो आप मतलब रेम स्लीप, यू आर स्लीपिंग बट योर ब्रेन इज एक्टिव एंड योर ब्रेन इज ड्रीमिंग। अब होता ही है कि स्लीप का मतलब ये है कि आपकी सारी बॉडी के मसल लूज हो गए, आपके सारे फंक्शंस बेसल बेसल लेवल पे आ जाते हैं। अब रेम स्लीप में होता नॉर्मली ये है कि बॉडी पूरी पैरालाइज्ड होती है, यानी आपके मसल्स मूव नहीं कर सकते और आप ड्रीम देख रहे होते हैं, यानी आपका जो माइंड है ना, जो ब्रेन है, वो एक्टिव होता है। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, स्ट्रेस और ट्रिगर, ये दोनों स्लीप पैरालिसिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। होता ये है कि द थिंग्स दैट यू फियर, द ट्रॉमास दैट यू हैव एंड द पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव, उन सबको रिलेट करके एक आपको ख्वाब आएगा, वो बुरा होगा, चाहे वो सुपरनेचुरल हो, चाहे वो कोई पास्ट इंसिडेंट्स हो। होता ये है कि यू आर ड्रीमिंग अबाउट दैट एंड योर माइंड इज ट्राइंग टू एक्ट आउट दैट ड्रीम, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स पैरालाइज हैं। तो आप काइंड ऑफ कॉन्शियस भी नहीं होते, आप अनकॉन्शियस भी नहीं होते, एक सबकॉन्शियस लेवल पे आपको समझ आ रही होती है कि मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ, और वो ख्वाब आपको थोड़ा रियलिटी बेस्ड लग रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी नहीं मूव कर सक रही होती। इसीलिए अक्सर स्लीप पैरालिसिस में होता है
कि एक कोई चीज आपके इधर बैठी होती है और आपका गला दबा रही होती है, एंड यू कैन फील समथिंग चोकिंग योर थ्रोट, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग, यू कैन नॉट मूव योर हैंड्स, आप उसको हटा नहीं पा रहे होते हो। तो ये दिस इज हाउ स्लीप पैरालिसिस हैपेंस। स्लीप पैरालिसिस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जरूरी नहीं है कि एक बंदा चौक ही कर रहा हो। आई हैड स्लीप पैरालिसिस जिसमें मुझे ना वेरी फनी टू से, वैसे मेरी जो छोटी बहन है फाइजा, मुझे एक दफा ऐसे नजर आया कि मैं बेड पे थी, जिस तरह से मैं लेटी हुई थी मैं उसी तरह लेटी हुई थी, और माय हेड वाज इस तरफ, और वहां पे फाइजा शीशे के सामने थी, और शीशे के सामने वो हवा में उड़ रही थी, चौकनी मार के वो ऐसे हवा में उड़ रही थी, और उसने यूं सर किया और उसका सर पूरा का पूरा यूं पीछे हुआ, एंड शी हैड अ वेरी वियर्ड एंड डरावना फेस, एंड आई रिमेम्बर इट एंड आई लाफ विद हर कि मैंने आपको ऐसे देखा था, क्योंकि मेरे और फायजा के ना चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस समझ लो बहुत ना ऐसे कंपटीशन वाले हैं, तो वो जो एक चाइल्डहुड बैड एक्सपीरियंसेस आके एक बंदे को दिखा रहा है कि ये ऐसे है, एंड देन आई वेक अप, आई वेक अप एंड आई सी कि शीशा भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, लाइट भी ऑन है, मैं भी उसी तरह सोई हुई हूँ, लेकिन वहां पे फायजा नहीं है। So sleep paralysis has different forms, and sleep paralysis happens because of stress. Yes, it is aggravated because of stress. Exact mechanism science को भी कुछ खास clarity नहीं है, लेकिन ये पता है कि stress and triggers that you have and the past experiences that you have, ये सारी चीजें उसको ज्यादा trigger कर रही होती हैं। तो I think we have no more time for the session anymore. बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ इंटरेक्ट करके भी, एंड इट वाज एन अमेजिंग सेशन टू बी लर्निंग फ्रॉम यू गाइज, एंड आई होप दैट यू गाइज लर्नड अ लॉट फ्रॉम मी टू। तो मिलते हैं फिर कभी किसी और वक्त। थैंक यू सो मच। ओवर टू एमन एंड अलीना। Thank you so much, Api, for joining us today. And thank you so much, everyone, for joining the webinar. Your certificates will be shared in the participants group. Stay tuned. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone.